ओके ठीक है. सो हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ना. फिलहाल के लेट मी जस्ट क्लोज माय कैमरा एंड आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. Yes, sir. Okay, that's great. So हाँ, okay, so we were talking about the combination of these things and it can be used majorly. जैसे स्पाइरल फ्रैक्चर की हम बात कर, स्पाइरल फ्रैक्चर हमने हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना. स्पाइरल फ्रैक्चर मीन्स द टाइप ऑफ फ्रैक्चर जहाँ पे देर इज एनी काइंड ऑफ एक्सेसिव टॉर्जन एक बोन के ऊपर. जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से ये बोन है, इसके ऊपर एक्सेसिव टॉर्जन अगर आ गया, इस तरह का कुछ टॉर्जन आ गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन लीड टू द स्पाइरल टाइप ऑफ स्पाइरल डिजाइन फ्रैक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्पाइरल फ्रैक्चर, एंड दैट इज द यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट unstable type of fracture. And in those cases we need to go for combination of both 1 and 2. Okay, so that as a whole, that is called as the AO method, and we can see this that these plates and these screws, they can be made up of titanium. Titanium जो है, titanium is one of the most, you can say, strongest metal that we can talk about. ठीक है, that is a titanium, and titanium बहुत कम इसमें rusting होती है, बहुत कम इसमें मतलब ये affect होता है because of any कोई भी एक्सटर्नल चीज़ की वजह से. तो दैट्स व्हाई टाइटेनियम इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर दिस प्लेटिंग एंड फॉर दिस नेलिंग. तो दैट एज अ होल इज कॉल्ड एज द एसोसिएशन फॉर ऑस्टियोसिंथेसिस मेथड. The second one that is called as the functional bracing. The functional bracing that was given by Sarmiento. Just remember the name. And majorly functional bracing का जो काम है, that has to do majorly with any kind of, मतलब हमने फ्रैक्चर को वापस हमने पहले रिड्यूस किया. लेट्स से यहाँ पे हम टीबिया का फ्रैक्चर मेजरली अगर हम बात कर रहे हैं, एंड टीबिया का फ्रैक्चर हुआ, एंड हमने इसको रिड्यूस किया था वो सब, बट बिकॉज ऑफ वेट बेरिंग ऑफ द पर्सन, और मे बी बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ फोर्स, कोई मस्कुलर फोर्स है इसके ऊपर. तो मेजरली हमारा जो फ्रैक्चर है वो अपनी जगह को छोड़ के जाता है दो दो रीजन की वजह से मेजरली. या तो कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, पर्सन वेट बेयर कर रहा है, या फिर एक्सटर्नली कोई फिर से कोई फोर्स आ गया उस स्ट्रक्चर के ऊपर, या फिर इंटरनली उसके ऊपर मसल्स अटैच. एंड इफ देर इज, लेट्स से हम बाइसेप फेमोरिस की बात करते हैं ऑन द हेड ऑफ फिबुला, एंड इफ देर इज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप फेमोरिस, अगेन हमारा जो इवन दो हम उसको वापस रिड्यूस किया था हमने फ्रैक्चर सेगमेंट को, स्टिल वो वापस मतलब अपनी प्लेस को छोड़ के हट जाएगा वापस, है ना. एंड वी अगेन नीड टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स पोजिशन. तो नाउ द थिंग इज कि we can go for this particular type of method that is called as functional bracing. So functional bracing में what they are doing, that it is done for 2 to 3 weeks after the injury. ठीक है, for first 2 to 3 weeks for after injury, majorly in the for the bones जहाँ पे weight bearing majorly किया जा रहा है. Now the thing is कि वहाँ पे because of this force we can see that we can get to see this bulging effect. So there is, you can say, this axial pressure, जो bone के axis के along जो pressure आ रहा है, or the muscle contraction or the limb tends to shorten the bone. मतलब again the muscle contraction or the external force that is trying to bring the bone fragments back into displaced position ना. तो in that case we need to have an external support. तो यहाँ पे अगर अगर ये displace हो रहा है तो of course as a whole the length of the whole structure जो है that will decrease, and there will be this bulging that we can get to see. So in order to prevent that we can go for the functional bracing. ठीक है, एक्सटर्नल ब्रेसिंग हम वी कैन परफॉर्म दैट, एंड द प्रेशर ऑफ द ब्रेस हेल्प्स टू मेंटेन द फ्रैक्चर अलाइनमेंट. तो मेजरली द फंक्शनल ब्रेसिंग हैज टू डू विद द अलाइनमेंट ऑफ द फ्रैक्चर, एंड मेजरली फॉर द लो वेट bearing bones like the tibia and the femur, and sometimes can be done for the humerus as well. So the functional bracing इसका major जो function है, that it has to do with to prevent any kind of bulging effect. And bulging effect हमें क्यों मिल रहा है? It can be seen because of again displacement of the fractured segments. Even if we brought it back into its normal position, still it got displaced, maybe because of any external force, maybe because of any axial force to the bone, or maybe because of any kind of muscle contraction. So in that case we need to go for this particular technique that is called as functional bracing. Okay, so till now we have talked about the AO method and we have talked about the functional bracing method. Okay, um, ठीक है. Now the third one and the most important and the most talked one, that is called as the Elizarov technique. तो Elizarov technique जो है, आई थिंक ये सबने सुना होगा, Elizarov technique है ना. तो Elizarov technique is one of the most successful orthopedic surgical method that we can talk about, because the thing is कि Elizarov technique सिर्फ
फ्रैक्चर रियूनियन की बात नहीं करता है, बट इसके अलावा इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट लाइक इफ देर इज एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बोन, अगर वो अफेक्ट हो गया मे बी बिकॉज ऑफ एनी ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, लेट्स से ये हमारी पूरी बोन थी एंड इस बोन में इतना पर्टिकुलर सेगमेंट गॉट कम्प्लीटली क्रश्ड बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या फिर मे बी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पे इतने सेगमेंट में हुआ एंड इतना पूरा पार्ट ऑफ द बोन गॉट डिजॉल्व कम्प्लीटली। तो अब हमें क्या करना है, लाइक ओवरऑल हमारी बोन का जो मास है या फिर बोन का जो लेंथ है वो कम हो गया ना, तो बट वी वांट इट टू गेट बैक टू नॉर्मल। तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, तो हियर वी कैन सी दिस कि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बोन गॉट अफेक्टेड मे बी लेट्स से बिकॉज ऑफ एनी पैथोलॉजी। तो यहाँ पे जो बोन गैप हमें देखने को मिल रहा है, नाउ व्हाट वी वांट, हमें हमें इस बोन गैप को फिल करना है ना। तो इन दैट केस इलिजारोस टेक्निक बेसिकली सेज कि इफ वी प्रोवाइड कंट्रोल्ड डिस्ट्रैक्शन एंड देन कंट्रोल्ड कंप्रेशन ऑन अ बोन, बट द बोन शुड बी अ लिविंग टिश्यू। ऑफ कोर्स लिविंग टिश्यू से उनका मतलब ये था कि देयर शुड बी प्रॉपर ब्लड सप्लाई टू दैट स्ट्रक्चर। अगर अगर बोन के पास प्रॉपर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, ब्लड सप्लाई ऑफ कोर्स हमने बात करी थी ना, वी टॉक्ड अबाउट द हेवर्जन कैनाल and the Volksmann canal है ना, Volksmann canal from periosteum to cortical bone and Haversian canal is present inside the cortical bone inside the osteon है ना। हमारी लैमेले प्रेजेंट थे कंसेंट्रिक रिंग्स एंड उसके सेंटर में हमारे पास हैवर्जन कैनाल प्रेजेंट था जिसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थे। तो जो ब्लड सप्लाई जो है इफ दैट इज प्रॉपर टू द बोन, तो इन दैट केस इफ वी गिव कंट्रोल्ड डिस्ट्रैक्शन एंड देन कंट्रोल्ड कंप्रेशन, it can help to get the to increase the length of the bone. So basically this is the exact line that is said that any living tissue when subjected to constant stretch under biological condition can grow to any extent। ठीक है, this was the exact line that he used। so it means any living tissue से मतलब है कि वहाँ पे blood supply majorly should be intact। तो अगर blood सब तो major हमारा prerequisite for Elizaro's technique is that the blood supply to the bone should be intact। अगर blood supply वहाँ पे proper है bone का, तो in that case definitely we need to think about Elizaro's technique। तो यहाँ पे the thing is कि what they are doing is that at a particular part of the bone they are just giving it a cut and they are distracting it, but the thing is कि they are not cutting it completely, bone को completely cut नहीं कर रहे, just a cut on the cortical bone is given and of course ये बहुत ही precise काम है। तो cortical bone के ऊपर कट दिया जा रहा है but not on the cancellous bone। now cortical bone को कट करने के बाद में there is a controlled distraction, एकदम से नहीं कि पूरा इसको distract कर दिया, there is a controlled sort of distraction that is given and we can see that there is this soft bone or this callus that is left behind है ना, ऊपर सिर्फ callus हमारा सिर्फ रह जाएगा इन द soft bone का, तो that is just left here and we can bring this proper this bone fragment जो कि हमने कट किया and we are bringing it to the region जहाँ पे हमारे पास bone deficit है, bone absent है, we are bringing it to that particular region and we are giving a controlled compression at this particular region। so we can see this कि because of this controlled distraction and controlled compression we can see osteosynthesis, bone cell formation यहाँ पे होगा and because of that as a whole again this bone will follow that procedure of बोन हीलिंग। देयर विल बी दिस कैलस जो कि आगे जाके और कॉर्टिकल बोन फॉर्म करेगा एंड अगेन यहाँ पे कंप्रेशन है, तो यहाँ पे अगेन वी विल सी कि देयर इज बोन फॉर्मेशन, बोन सिंथेसिस जो कि हमें देखने को मिलेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट आफ्टर सम टाइम विल सी दैट द बोन लेंथ एज अ होल हैज इंक्रीज्ड एंड द बोन हैज लाइक द बोन इज नाउ रेडी टू बी फंक्शनल, जो कि पहले जिस तरह से फंक्शनल था उस तरह से वी कैन यूज इट नॉर्मली। तो दैट इज द एलिजारोस टेक्निक एंड फॉर दैट वी कैन यूज we need to know about these external supports, जैसे there are these external ring fixators, ये ring fixators present होते हैं। likewise we need to talk about these external pins, ठीक है, these external pins which are inserted into the bone है ना, तो ring fixators हो गए and all these pins that can which are used for the Elizaro's technique, but with the major जो basic यहाँ पे principle है that is कि there is controlled distraction and controlled compression that is given and eventually because of that as a whole we can even increase the length of the bone and that is called as Elizaro's technique and it is like one of the most widely used technique, orthopedic surgical technique and मेजरली इन द बोन्स जहाँ पे एक पर्टिकुलर बोन सेगमेंट अगर डिजॉल्व हो गया या फिर इतना मतलब काफ़ी क्रश इंजरी में चला गया जहाँ पे इट कांट बी रिपेयर, तो इन दोज केसेस द एलिजारोस टेक्निक कैन बी यूज्ड। ओके,
No, the thing is कि ठीक है, Elizaro's technique has great outcomes, but the thing is that there can be some of the disadvantages. So first of all, we can see कि it can be used for limb lengthening even up to 18 inches. So you can just remember this कि 18 inches तक मतलब that is the maximum you can say range जहाँ तक we can increase the length of the bone in case of non-union. अगर bone unite नहीं हो रही है, any kind of deformity अगर present है, तो in those cases again let's say अगर even if you're talking about gun stock deformity जहाँ पे the elbow has come into varus position, तो in that case also we can see कि ठीक है वहाँ पे ऑस्टियोक्लासिस करके उसको ब्रेक करके बोन को वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में लाया जा रहा है. बट लेट्स से वहाँ पे कोई बोन डेफिसिट था या फिर कोई बोन डिफॉर्मिटी था जहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट इट कांट बी ब्रॉट, या फिर कोई बोन मतलब वो बोन इनसफिशिएंट है वहाँ पे पूरा का पूरा नॉर्मलाइज मतलब नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए, तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर एलिजारोस टेक्निक एंड ऑल दैट. ठीक है. फॉर आर्थ्रोडेसिस, हम आर्थ्रोडेसिस पढ़ेंगे आगे जाके, ऑस्टियोमाइलिटिस भी हम आगे पढ़ेंगे क्या कंडीशन है. तो इन दोज केसेस वी कैन गो फॉर, तो ऑस्टियोमाइलिटिस अगेन वी आर सेइंग इट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, तो कोई पैथोलॉजी यहाँ पे हुई, द बोन फ्रेगमेंट गॉट अफेक्टेड एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू गो फॉर द एलिजारोस टेक्निक. बट द डिसएडवांटेज, इसमें मेजरली जो डिसएडवांटेज जो आता है दैट इज कॉल्ड एज दैट इज द नर्व पाल्सी बाय नहीं दिस थिंग पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर बाय पिन इंसर्शन से नर्व भी पाल्सी हो सकती है, बट मेजरली द पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेजरली मीन्स कि कोई एक्सटर्नल हम यहाँ पे बिकॉज वी आर इंसर्टिंग दीज पिन्स है ना, एंड इफ दीज लाइक इफ देर इज इम्प्रॉपर केयर दैट इज टेकन कि यहाँ पे मतलब अगर इनको प्रॉपरली एसेप्टिक नहीं रखा गया, या फिर इफ देर इज एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन दैट इज बीइंग कैरिड टू द इनर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू दीज पिन्स, तो दैट कैन लीड टू दिस पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन. एंड कैन एनीवन टेल मी कि एक टर्म जो हम यूज़ करते हैं, मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ, देयर इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज अगर हम उस कंडीशन की बात करेंगे, एटियोलॉजी की बात करेंगे, द रीज़न कॉज फॉर दैट कंडीशन जहाँ पे पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, तो वी कैन यूज़ अ टर्म दैट इज़ कॉल्ड एज आइट्रोजेनिक है ना. वी कैन से दैट इन्फेक्शन इज आइट्रोजेनिक इन नेचर. जैसे हम एक और टर्म यूज़ करते हैं इडियोपैथिक, आई थिंक ये सबने टर्म यूज़ किया है. द कंडीशन इज idiopathic in nature ना. It means कि we don't have any specific cause for this condition, but it can be caused because of any environmental factor या फिर ये या वो. ठीक है. लेकिन वहाँ पे हम यूज़ करते हैं idiopathic जहाँ पे हमें exact cause नहीं पता है, and the term here we can use is iatrogenic. It means कि because of any kind of medical negligence, अगर यहाँ पे पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, या फिर कोई भी कंडीशन जहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से कंडीशन अगर हो रही है, एंड वो पैथोलॉजी अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो इन दैट केस वी कैन कॉल इट एज आइट्रोजेनिक इन नेचर. दैट कंडीशन इज आइट्रोजेनिक इन नेचर. ठीक है. उसका जो एटियोलॉजी है दैट इज आइट्रोजेनिक. ओके. ठीक है. नाउ कमिंग अप टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर. ओके. तो टिल नाउ वी हैव बेसिकली एक बार पूरा अगर पिछला अगर हम देख ले, तो हमने कुछ फ्रैक्चर एपोनिम्स की बात करी, हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की बात करी, वी देन टॉक्ड अबाउट क्या चीज़, हमने फ्रैक्चर हीलिंग की बात करी. ठीक है. उसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट द फेजेस ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग या फ्रैक्चर मैनेजमेंट है ना, कि मतलब द एमरजेंसी फेज, द डेफिनेटिव फेज एंड द रिहेबिलिटेशन फेज. उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट द ओपन टाइप ऑफ फ्रैक्चर जहाँ पे हमने बात करी अबाउट वी टॉक्ड अबाउट द अबाउट वुंड डेब्रीमेंट, एंड इसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट like how to we need to go for, like we need to convert it into closed fracture, and then we need to follow the same procedure for closed fracture, you know? And we talked about the difference between primary intention and secondary intention as yeah, secondary closure of wound. And along with that we talked about these methods, these surgical methods which can be used in case of any affection of the wound. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेशन. देखिए चलो फ्रैक्चर तो हो गया, अब फ्रैक्चर के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकती है. तो वी कैन जस्ट डिवाइड दिस कॉम्प्लिकेशंस इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स. द इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन कि उसी टाइम पे क्या क्या देखने को मिल सकता है. द अर्ली कॉम्प्लिकेशन कि पहले कुछ मतलब कुछ डेज में और मे बी कुछ वीक्स में हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हम देख सकते हैं. एंड देन द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन और द लेट कॉम्प्लिकेशन. ठीक है. ओके. तो here the thing is कि first of all if we are talking about the immediate complications, so we can say there can be this hypovolemic shock. Let's say कोई RTA हुआ है वहाँ पे and there is excessive blood loss, and excessive blood loss की वजह से there is this volume of the blood which is decreasing and which can lead to a hypovolemic shock. So majorly just remember this thing is really important कि a person will go into hypovolemic shock only after 20% loss of the total blood.
तो इट मीन्स कैन एनीवन टेल मी कि हाउ मच इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड, टोटल कितना लीटर ब्लड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट अराउंड? 5. हाँ, मतलब 5 liters, you can say almost around 5 liters of blood is present inside in our this thing है ना, in our body, and out of that 20% अगर आप निकाल के लाओगे that comes out to be almost 1.5 to 2 liters ना, या फिर 1500 to 2000 ml. तो if that much amount of blood loss we have seen, so in that case we can say the person goes into hypovolemic shock, ठीक है? Along with that, if there is any there might be any injury to the vessels and any kind of like muscles and tendons and joint and viscera, तो those are the immediate complication. उसी टाइम पे जो मतलब ट्रॉमा की वजह से मेजरली जो complications हम देखें, that can come under immediate complications. अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में नाउ वी कैन सी कि देयर कैन बी, अभी हम इन कंडीशंस को एक एक करके पढ़ेंगे. देयर कैन बी हाइपोवॉल्मिक शॉक अगेन, लाइक आफ्टर सम टाइम, उस टाइम पे नहीं हुआ लेकिन आफ्टर सम टाइम द पर्सन कैन गो इनटू हाइपोवॉल्मिक शॉक. देयर कैन बी दिस ARDS, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस कि ये हमें कैसे देखने को मिलेगा. देयर कैन बी फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, DVT, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्रश सिंड्रोम कैन बी देयर. तो क्रश सिंड्रोम भी अभी हम पढ़ेंगे आगे. ये सारी कंडीशंस को हम पढ़ने वाले हैं, हमें आगे यही करना है. कंपार्टमेंट सिंड्रोम एंड ट्रॉमेटिक फीवर कैन आल्सो बी सीन. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर हम लेट कॉम्प्लिकेशन में जा रहे हैं तो लेट कॉम्प्लिकेशन में मेजरली वी कैन टॉक अबाउट मैल यूनियन, नॉन यूनियन, है ना. या फिर डिलेड यूनियन या क्रॉस यूनियन हमें देखने को मिल सकता है मेजरली. और मे बी दे कैन बी एवेस्कुलर नेक्रोसिस या जॉइंट स्टिफनेस वी कैन टॉक अबाउट. हाँ, देयर इज दिस इंटरेस्टिंग कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी, और इसका दूसरा नाम जो है दैट इज कॉल्ड एज स्यूडेक्स डिस्ट्रॉफी. ठीक है, स्यूडेक्स डिस्ट्रॉफी यहाँ पे कहीं है. जस्ट सेकेंड. हाँ, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी और स्यूडेक्स डिस्ट्रॉफी इसको हम कहते हैं. तो अगेन दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट. तो इसको अभी हम इस पे आते हैं. ओके, तो बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ओके, talking about first of all talking about ARDS, that is acute respiratory distress syndrome. तो acute respiratory distress syndrome and fracture का लिंक आपस में क्या है? मेजरली इसका लिंक ये है कि whenever that there is a fracture of a bone, तो in that case we can see this कि because of fracture we can see this there are inflammatory mediators which are produced. Inflammatory mediators हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं and which cause disruption of the microvasculature. तो मेजरली हमारे जो ब्लड वेसल्स है, मेजरली जो माइक्रोवेस्कुलेचर है, लेट्स से अगर हम कैपिलरीज की बात करते हैं या फिर हम आर्टीरियल्स की अगर हम बात कर सकते हैं, तो वी कैन से उन वेस्कुलेचर का देयर कैन बी अफेक्शन, देयर कैन बी डिसरप्शन ऑफ द माइक्रोवेस्कुलेचर बिकॉज ऑफ दोज इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स. एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर वहाँ पे वो कैपिलरीज अगर वो सब अगर अफेक्ट हो रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट मेजरली हमारा जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ अफेक्ट होगा? एट द रीजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन. मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन एक बार टर्म यूज़ किया था. हम लंग्स के अंदर देखते हैं वी हैव गॉट दिस मतलब ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई, एंड उसके बाद एल्वियोलाई प्रेजेंट है ना. तो एल्वियोलाई के नीचे वी कैन सी हमारा कैपिलरी जो है वो पास कर रही है. तो कैपिलरी एंड एल्वियोलाई के बीच में वी हैव गॉट द बेसमेंट मेम्ब्रेन. एंड इफ दैट कैपिलरी गेट्स अफेक्टेड, बिकॉज वो कैपिलरी का काम है कि वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द एल्वियोलाई, एंड दैट इज बीइंग टेकन अप बाय द ब्लड, एंड दैट्स व्हाई वी से कि हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है वहाँ पे. तो बट थिंग इज कि अगर वो माइक्रोवेस्कुलेचर अगर अफेक्ट हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन में इन द मतलब इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द एल्वियोलाई, तो ऑफ कोर्स एज अ होल द ब्लड इट विल गेट अफेक्टेड ना. तो दैट कैन इवेंचुअली से मतलब वी कैन से कि उस पर्सन का ओवरऑल जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है दैट इज गेटिंग अफेक्टेड. And in that case we can say कि or you can say amount of oxygen level in the blood is decreasing. So we can say that can lead to this condition that is called as acute respiratory distress syndrome. In that case the person can go into tachypnea. Tachypnea is called as, tachypnea means increased this thing na, breathing rate, if that increases, abnormal rapid breathing, or the person can go into labored breathing. Labored breathing means कि ओके, लेबर्ड ब्रीदिंग मीन्स कि नॉर्मली जैसे हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो इन दैट केस हमारा डायफ्राम एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग. बट इफ देर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द SCM, मतलब हमारा SCM भी साथ में मतलब ऐड हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर ब्रीदिंग, है ना. या फिर ट्रेपीजियस मसल्स हो गई, ये हमारे मतलब साथ में काम करे. और यू कैन से ऑल दीज मसल्स विच आर प्रेजेंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एंड इफ दे आर ऑल्सो गेटिंग रिक्रूटेड, वो उनका भी रिक्रूटमेंट हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन में, ताकि हमारा वो एडिशनली हेल्प करवाए ओवरऑल हमारा लंग एक्सपेंशन में. तो इन दैट केस वी कैन कॉल इट एज लेबर्ड ब्रीदिंग, है ना.
तो we can say that accessory muscles are being used for breathing, and that is called as labored breathing. Okay, so here just remember this, that PO2, the PO2 जो है that becomes less than 40 mm of Hg, and along with that, in that case 100% ventilatory support is being provided to the person. That is called as ARDS. But majorly the reason, the cause for that is that there are these inflammatory mediators because of fracture, inflammatory mediators which are entering the vasculature and which are majorly affecting the vasculature, majorly in the region जहाँ पे हमारा blood जो है is getting oxygenated. And in those regions, if the microvasculature or the capillaries, they get affected or they get disrupted, so that can lead to ARDS. The second condition that is called as fat embolism syndrome. अब fat embolism syndrome क्या है? हमने ये देखा था कि जो shaft of the bone जो है या फिर diaphysis जो है, उसके अंदर we have got two different types. So मतलब हम कहते हैं ना कि we have got the red bone marrow and the yellow bone marrow. तो we can say शाफ्ट में मेजरली हमें देखने को मिलता है कि दोनों एंड्स पे हमारे पास रेड बोन मैरो प्रेजेंट है, एंड रेड बोन मैरो इज मेजरली फॉर एरिथ्रोपोइसिस ना, सबने ये टर्म सुना है एरिथ्रोपोइसिस, मतलब देर इज रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, है ना, और तो दैट उसके लिए द मेजरली द रेड बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल, एंड अलॉन्ग विद दैट वी कैन से द येलो बोन मैरो, जहाँ पे वी सी दैट देयर इज मेजरली दिस एडिपोज टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बोन, जो कि मेजरली हमारा मतलब मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक एनर्जी सप्लाई, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑल दैट, ठीक है. तो दैट इज द येलो बोन मैरो. द थिंग इज कि इफ देयर इज एनी अफेक्शन और एनी फ्रैक्चर ऑफ द बोन इन मेजरली इन द शाफ्ट रीजन, तो देयर आर दीज एडिपोज टिश्यूज which come out of the bone and which can travel all the way along the vasculatures. तो हमारा blood vessels के along it can travel, एंड अगर ब्लड वेसल्स के अलॉन्ग वो जो एडिपोज टिश्यूज एंड जो येलो बोन मैरो का जो स्ट्रक्चर्स है वो अगर ट्रैवल कर रहा है, तो इन दैट केस यू कैन सी कि इट कैन एंटर इनटू वेरियस डिफरेंट रीजन्स. इट माइट एंटर मतलब okay, so we can see that severe injuries with the sorry, it can majorly lead to different kind of like features it can show, like cerebral feature, मतलब हमारा neurological structures को affect कर सकता है. It can affect the pulmonary structures. So let's say अगर वो adipose tissues जो है, if they are entering the pulmonary structures, है ना, या फिर if it enters the blood vessels which are majorly responsible associated with the blood with the pulmonary function, so in that case it can affect the pulmonary function of the person. तो इसमें tachypnea and tachycardia, we can say tachycardia means increased heart rate, है ना, and along with that we can say कि अगर if it is entering the blood vasculature inside the brain and all that, या फिर brain supply करें, तो in that case it can majorly lead the person to become drowsy or restless or disoriented or all those things, ठीक है. So that can be the cerebral features of fat embolism, and there can be pulmonary features of fat embolism. इसके अलावा there is this another thing that is called as petechial rash. The petechial rash is another, you can say, this typical feature of fat embolism. तो petechial basically आपको rash like आपको ये skin के ऊपर देखने को मिलेगा, skin rashes majorly in the neck region and in the axillary fold region में आपको देखने को मिलता है ये, and that can depict that there might be presence of fat embolism syndrome, and that is again caused because of these inflammatory mediators. तो हमारा जो मतलब येलो बोन मैरो है that got affected, and because of that it entered the vasculature and all that, and as a response of that the body starts producing these inflammatory mediators, and उसकी वजह से body response शो कर रही है, and because of that the body starts showing these petechial rashes. So petechial rashes can also be again a potential these sign for fat embolism syndrome. अगर एक person का fracture है and उस केस में अगर हमें कुछ टाइम के बाद में ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन में अगर हमें देखने को मिल रहा है पेटिशियल रैश, तो इन दैट केस अगेन द पर्सन नीड्स टू बी ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी फिजिशियन, जहाँ पे वी नीड टू रूल आउट कि वेदर वहाँ पे फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम तो नहीं हो रहा है ना. ओके, इसमें देयर इज अनदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज ओके दैट इज दिस थिंग दैट इज हाँ, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस. तो अगर हम एक फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम का पेशेंट है, and if we ask that person to like if we get a chest x-ray from that person, तो in that case हमें chest x-ray में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है. मतलब जो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इसका मतलब है कि देयर इज दिस एडिपोज टिश्यूज which have entered the pulmonary structures of the person, and again that can lead to all this pulmonary dysfunction of the individual, ठीक है. and in that case हमें ये मतलब white
स्नोफ्लेक्स टाइप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, ठीक है. Just remember this is really important कि in which condition you will get to see the snowstorm appearance, that is the fat embolism syndrome. Okay, and that is one of the early complications of fracture. Likewise इस टाइप के appearances की हम बात करेंगे ट्यूमर में बहुत सारे ट्यूमर्स है, ऑस्टियोक्लास्टोमा, एडमेंशियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा एंड ऑल दैट. तो वहाँ पे हमें तो हर एक ट्यूमर का अलग अलग अपीयरेंस है, किसी का हनीकॉम अपीयरेंस है, किसी का अलग अलग टाइप के अपीयरेंसेस, अभी मेरे को याद भी नहीं आ रहे. तो द थिंग इज कि देयर वी नीड टू रिमेंबर दैट, बिकॉज दैट दोज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्टली आस्क्ड इन द एग्जाम्स, और यू मस्ट रिमेंबर दैट थिंग, because that is really important. Because let's say if you start working in any setting जहाँ पे पेशेंट विद ट्यूमर कंडीशन अगर आ रहे हैं, तो इन दैट केस फॉर श्योर उनके डॉक्यूमेंटेशन पे यही चीज़ देखने को मिलेगी कि देर इज़ हनीकॉम अपीयरेंस सीन इन द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग एंड ऑल दैट, है ना. तो वी नीड टू रिमेंबर कि कौन से टाइप का अपीयरेंस हमें देखने को मिल रहा है. देयर इज अ टिपिकल नेम गिवन टू दैट अपीयरेंस, तो वी नीड टू रिमेंबर दोज द नेम्स ऑफ दोज अपीयरेंसेस, ठीक है. तो फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम में it is the snowstorm appearance that we can talk about. आई थिंक डीवीटी के बारे में सबने सुना होगा, सबने बात करी है, द डीप वेन थ्रोम्बोसिस, है ना. तो अगेन वी कैन से देयर इज एनी काइंड ऑफ ब्लड क्लॉट दैट गॉट फॉर्म्ड एंड दैट एंटर्ड these blood vasculature, and that can lead to the affection of the blood supply. That is called as deep vein thrombosis, majorly in the deep veins, है ना. And which can, like, there is this immobilization which can cause venous stasis, मतलब there is a stoppage of the blood supply inside the veins, and which can eventually lead to thrombosis of the vein. तो मतलब vein के अंदर thrombus form हो गया है, it is the blood supply is being affected, and in that case majorly the sign that is used here, that is the Hohmann's sign. Hohmann's sign can be used. Hohmann's sign basically means that foot को we are trying to passively bring it into dorsiflexion, and dorsiflexion में लाने के बाद में of course हमारे जो calf muscles है those are getting stretched, and if there is a pain that is coming in the person, मतलब that the person is complaining of, so in that case we can say that the Hohmann's sign is positive and the person might be having deep vein thrombosis. तो अगर आपके पास patient आता है with deep vein thrombosis, तो for sure you need to go for this testing, जहाँ पे आप you are testing the Hohmann's sign, and if the person says that the person is having this pain sensation in the lower limb, majorly in the calf region, क्योंकि आप उसको stretch कर रहे हो, तो in that case you can say that the deep vein thrombosis might be present in that individual. Okay, इसके अलावा there is another sign that is called as Hoffman's sign. किसी ने सुना है? आपको बताना चाहिए. Hoffman's sign is majorly used in upper motor neuron lesion. चलो लेट्स टेक दैट एज अ होमवर्क. आप लोग देखना है इस चीज़ को. हॉफमैन साइन क्या है? हॉफमैन साइन में मेजरली मेजरली दे आर टैपिंग ऑन द रिंग फिंगर, ना, टैपिंग ऑन द रिंग फिंगर, एंड दे और मे बी ऑन द मिडिल फिंगर. हाँ, एंड दे सी दैट इफ देर इज फ्लेक्शन, एक फ्लेक्शन रिस्पॉन्स हमें अगर देखने को मिलेगा ऑन द इंडेक्स फिंगर एंड ऑन द थंब, then we can say just like जैसे हम बेबिंस्की साइन की बात करते हैं ना, वैसे ये भी एक साइन होता है that can be used to figure out whether there is any presence of any kind of upper motor neuron lesion or not. That is Hoffman's sign. तो just go through this या पढ़ना एक बार Hoffman's sign के बारे में. But this is Hohmann's sign in case of deep vein thrombosis. Okay. Now coming up to the crush syndrome and okay, the compartment. तो crush syndrome में majorly we can see कोई भी हैवी स्ट्रक्चर है कुछ भी, या मे बी इन RTA कोई भी हैवी स्ट्रक्चर कोई है जो कि बोन के ऊपर आया, एंड द होल स्ट्रक्चर गॉट क्रश्ड. अब वो स्ट्रक्चर जब पूरा क्रश हो गया है, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज दिस टॉर्निकेट लाइक इफेक्ट, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है. हाँ, तो सिमिलर इफेक्ट, ये एग्जैक्ट यहाँ पे टर्म दैट वी कैन यूज, दैट इज द सिमिलर इफेक्ट आफ्टर यूजिंग अ टॉर्निकेट. टॉर्निकेट इज, आई थिंक ये सबने देखा होगा, जब भी आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो कुछ, तो वहाँ पे भी या फिर मे बी we are using this structure, this tourniquet, जो कि हम अप्लाई करते हैं एक रीजन पे, so as to stop the amount of blood supply to some extent, है ना, वहाँ पे, and maybe for some testing or something else, that is called as tourniquet. So tourniquet like effect, we can see this here. Okay, I think we're left with 30 minutes अभी ना. Okay, so we can see this नहीं 30 minutes हो गया. Okay. तो tourniquet like effect we can see this in that person, and because of that now we can see again there are these you can say inflammatory mediators which can enter the kidney and all that.
तो massive crushing of the muscle leading to major shock, and majorly there is this blood supply that gets affected ना. तो अगर blood supply अगर वहाँ पे affect हो गया, तो in that case majorly जो kidney है, तो वहाँ तक के लिए majorly we see the blood supply gets affected, and because of that we can see कि there is this okay, तो majorly the you can say the renal tubules inside the kidney, मतलब वहाँ पे जो हम बात करते हैं about the nephrons and all that, those get affected because there is this blood supply which is getting affected. There is blood supply in the muscles and all that, जो कि हमारा tourniquet like effect की वजह से that got affected, and the blood it might enter the renal tubules, हमारे kidney के अंदर जो tubules जो हमारे glomerulus and nephron के जो structures है उसके अंदर it might enter, and that can eventually affect the functions of the kidney, मतलब किडनी के जो फंक्शन है, नेफ्रॉन के जो फंक्शंस है उनको डिस्टर्ब कर सकता है. तो इन दोज केसेस वी कैन सी दीज कंडीशंस like oliguria means there is decreased urine, or you can say the person might go into apathy, that means there is decreased interest, or maybe restlessness or delirium. That delirium is basically a neurological condition, but we can see these conditions in case of crush syndrome. The reason being कि यहाँ पे मेजरली द ब्लड सप्लाई गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस टॉर्निक्वेट लाइक इफेक्ट, वहाँ पे ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ब्लड might enter the tubules inside the nephron and in the kidney, and that can affect other functions of the body, like majorly हमारा urinary function जो है ना, and all that जो filtration and वो वाला जो process that might get affected, and that might lead to majorly it might lead to oliguria, that is called as that is decreased यूरिन. ठीक है, ऐसे ही कोई कंडीशन होता है इसका अपोजिट, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीयूरिया. पॉलीयूरिया मींस इंक्रीज्ड यूरिन. कोई मेरे को बताएगा पॉलीयूरिया कैन बी सीन इन विच कंडीशन मोस्ट कॉमनली? डायबिटीज. हाँ, डायबिटीज मेलाइटिस में मोस्ट कॉमनली वी कैन गेट टू सी पॉलीयूरिया, है ना. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट oliguria. Oliguria means decreased urine, yeah? That can be seen majorly in the crush syndrome. Okay, now coming up to the compartment syndrome. Yeah. तो इसमें मसल आर्टरी को ऐसा क्रश कर रहा है या मसल का ही मतलब एकदम? हाँ, देखो यहाँ पे क्या है कि ओके, यहाँ पे क्या है कि देखो हैवी ऑब्जेक्ट जो है दैट फेल ऑनटू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. अगर एक स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा एक हैवी स्ट्रक्चर फॉल कर गया, तो इन दैट केस पूरा का पूरा वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई दैट गॉट अफेक्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब वहाँ पे टॉर्निक्वेट लाइक इफेक्ट है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो हमारा लेट्स से एक पर्टिकुलर रीजन या फिर एक आर्टरी जो है वो अफेक्ट हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें बाकी ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पे. ठीक है, ब्लड सप्लाई मेजरली गेटिंग अफेक्टेड, एंड वो जो ब्लड सप्लाई हमारा जो स्ट्रक्चर में पास करना चाहिए था दैट गॉट अफेक्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो ब्लड है दैट माइट पर्सिपिटेट. देखो इट पर्सिपिटेट्स, इट माइट एंटर द रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी एंड ऑल दैट. ठीक है, तो उसके अंदर इट माइट पर्सिपिटेट, या फिर इसके अंदर वो एंटर कर सकता है, बिकॉज जहाँ पे उस ब्लड सप्लाई को जाना चाहिए था दैट गॉट अफेक्टेड. वो जो ब्लड जो आर्टरी दैट गॉट अफेक्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट माइट एंटर इनटू अदर रीजन्स ऑफ द बॉडी, एंड मेजरली इसका जो इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं दैट कैन बी सीन मेजरली in the nephron and in the functions of the kidney, and that can majorly lead to all these signs. So there is this precipitation of the blood because of major crushing of the structure, and because of that now we can see these things जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, आई थिंक शिवानी आपने पूछा था. ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं सबको देख नहीं पाऊँगा, मतलब आपके नाम नहीं दिखेंगे. आई थिंक यहाँ पे कहीं दिखेगा वह कुछ ऐसा है, बट चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. चलो ये अच्छा है इसमें कि टाइम सामने दिख रहा है, तो पता चल रहा है कि ओके. तो दैट इज़ बेसिकली क्रश सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, एंड ओके ठीक है. कंपार्टमेंट सिंड्रोम की मेजरली अगर हम बात करें यहाँ पे, हाँ, कंपार्टमेंट सिंड्रोम मेजरली आई थिंक ये सबने टर्म सुना होगा. कंपार्टमेंट सिंड्रोम इट इज़ अ हाईली पेनफुल कंडीशन. सॉरी, एंड द थिंग इज कि यहाँ पे अगेन इफ देयर इज एनी इंजरी, कोई भी इंजरी की वजह से इन अ पर्टिकुलर, तो वी सी दैट अगर हम एक मसल की बात करते हैं, एक मसल के अंदर जो मसल स्ट्रक्चर्स है, लाइक एक ऐसा नहीं कि पूरे फाइबर एक ही पूरे बंडल में प्रेजेंट है, अलग अलग बंडल्स में हमें मसल फाइबर्स देखने को मिलेंगे, एंड देयर इज दिस सार्कोलेमा जो कि दैट इज द कवरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सार्कोमेयर. तो वी कैन से उसके ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट होता है वो अलग अलग बंडल्स में प्रेजेंट होता है. तो वी कैन से दिस इज वन कंपार्टमेंट एंड दिस इज अनदर कंपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स हमें देखने को मिलता है. नाउ इफ देर इज एनी इंजरी बिकॉज ऑफ दैट, वहाँ पे एडिमा
या फिर मे बी कोई हमें इस्चीमिया देखने को मिला वहाँ पे, है ना, या फिर कोई हेमेटोमा फॉर्म हो गया वहाँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज स्वेलिंग दैट इज सीन इन दैट रीजन. बिकॉज ऑफ दैट, अब स्वेलिंग की वजह से अगेन द ब्लड सप्लाई इन दैट पर्टिकुलर मसल or maybe in that particular compartment of the muscle got affected, and because of that the blood supply got affected, and because of that the muscle went into further ischemia. एंड उस इश्यूमे की वजह से वी कैन सी कि वो स्वेलिंग जो है वो हमें, या फिर वो जो मसल अफेक्शन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे, द पेन इज इंक्रीजिंग फर्दर. तो वी कैन सी जो मसल है वो इट एंटर्स दिस विशियस साइकिल, वो इस विशियस साइकिल में एंटर कर जाती है जहाँ पे स्वेलिंग इंजरी की वजह से स्वेलिंग वहाँ पे हुआ था, but swelling की वजह से it is affecting the blood supply of that compartment of the muscle, and because of that अब blood supply अगर affect हो गया तो it is going into further ischemia, and further the pain is increasing and all. तो that इस vicious cycle के अंदर वो muscle जो है वो compartment जो है वो फंस जाता है, and because of that further the condition increases, the swelling and the ischemia and all that increases further, and that condition is called as compartment. So again it can be seen because of any इंजरी जहाँ पे कोई भी अफेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन एंटर द कंपार्टमेंट सिंड्रोम दिस साइकिल, and there is this excessive high amount of pain that the person can experience because of compartment syndrome. ठीक है, आई थिंक वी गॉट इट, है ना, कंपार्टमेंट सिंड्रोम दैट फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो ट्रिगर था फॉर स्वेलिंग या फॉर मे बी फॉर एडिमा, दैट वाज इंजरी, बट उसके बाद में हम देखा बिकॉज ऑफ दैट स्वेलिंग द ब्लड वेस्कुलेचर गॉट अफेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंपार्टमेंट, एंड उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई इफेक्ट होने की वजह से वहाँ पे हमें इस्चीमिया देखने को मिल रहा है, एंड द पेन इज फर्दर इंक्रीजिंग इन द मसल. तो अब वो उसकी वजह से इंक्रीज होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज कंपार्टमेंट सिंड्रोम एज अ होल. Okay, leading to muscle ischemia, this thing. Okay. Okay, and it can be majorly seen in case of supracondylar fracture. It can be majorly seen in forearm bone fracture, and majorly in tibia. मतलब these are the regions जहाँ पे most commonly we can get to see these conditions. There can be this stretch test, जैसे कि हमने ऊपर देखा था वहाँ पे होमन साइन डीवीटी, वहाँ पे भी अगेन वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेच द काफ स्ट्रेच होगा, एंड वहाँ पे स्ट्रक्चर्स इफेक्ट होंगे, मतलब उनके ऊपर आएगा, मतलब प्रेशर आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी दिस पेन जो कि वहाँ पे देखने को मिलेगा. लाइकवाइज वी कैन टॉक अबाउट द स्ट्रेच टेस्ट अगेन, यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू, जैसे लेट्स से अगर फोर आर्म में हमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिला, तो इन दिस केस ओके, एक मिनट बचा है, तो इन दिस केस अगर हम स्ट्रेच करेंगे फोर आर्म को, तो इन दैट केस द पेन विल फर्दर इंक्रीज, एंड दैट कैन से कि इन दैट केस वी कैन से कि यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम प्रेजेंट होने के चांसेस है. एंड द थिंग इज कि अगेन इफ देर इज दिस प्रेशर इनसाइड द कंपार्टमेंट, मसल कंपार्टमेंट के अंदर, अगेन दिस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन कि इफ द कंपार्टमेंट प्रेशर इज मोर देन 40 mm ऑफ एच, हम प्रेशर जो इंक्रीज करते हैं दैट इज मेजर्ड इन ऑफ एच, है ना. तो इफ द कंपार्टमेंट प्रेशर इज मोर देन 40 ऑफ एच, तो इन दैट केस वी कैन से दैट इज अ पॉजिटिव कंपार्टमेंट सिंड्रोम. ठीक है, इन दैट केस द कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज पॉजिटिव, एंड ऑफ कोर्स इन दैट केस मेजरली यहाँ पे ये द सर्जिकल मेथड दैट इज कॉल्ड एज फैसिएक्टमी, दैट कैन बी मेजरली परफॉर्म. तो फैसिएक्टमी में ओवरलाइंग जो फेशिया है दैट इज बिंग कट ओपन, अब फेशिया को कट कर रहे हैं तो सो एज टू ओपन इट अप, एंड वहाँ पे अब अमाउंट ऑफ कंप्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, या अमाउंट ऑफ कंपार्टमेंट प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, एंड कंपार्टमेंट प्रेशर डिक्रीज हुआ, इवेंचुअली हमारा जो मसल पेन जो था वो दैट ऑल गॉट डिक्रीज. और वी कैन गो फॉर फिबुलेक्टमी. तो फिबुलेक्टमी अगेन यहाँ पे फिबुला का एक पर्टिकुलर पार्ट इज गिविंग, जैसे हम टीबिया में अगर हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं वहाँ पे इफ द कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज प्रेजेंट, आई थिंक ये बंद होने वाला है, तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर फिबुलेक्टमी. फिबुला इज नॉट अ वेट बेरिंग बोन, एंड कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट हमने कट एंड रिमूव किया, एंड वहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रेशर गॉट, मतलब प्रेशर जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया वहाँ पे, है ना. एंड द फिबुलेक्टमी एंड फेशिएक्टमी कैन बी डन मेजरली इन केस ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम. ठीक है, मैं एक बार लिंक फिर सेंड करता हूँ, बस एक लास्ट लिंक होगा ये फॉर दिस थिंग, एंड बस लास्ट का थोड़ा सा बचा, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो आई थिंक वी आर डन विद द कंपार्टमेंट सिंड्रोम फॉर नाउ, एंड लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म डिफेक्ट्स जो कि हम देख सकते हैं. मतलब हमने इमीडिएट देख लिया, हमने शॉर्ट टर्म देख लिया, अब लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं यहाँ पे. ओके,
ओके, आई जस्ट वांट टू नो दिस कि लाइक आर यू गाइस कंफर्टेबल विद दिस? मैं इसका कुछ करता हूँ, मैं ये आई थिंक मैंने कल वो देखा था, इसका प्रो वर्जन है, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा, उसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आई थिंक ये चीज़ मतलब ठीक नहीं है बीच बीच में, मतलब फिर से वो वापस ज्वाइन करना, फिर से लिंक सेंड करना, आई थिंक सबके लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो आई थिंक इट्स बेटर कि उसमें अगर हम रहे, एंड सब लोग फिर ज्वाइन भी नहीं कर पाते एक सेकेंड उसमें, तो इसलिए ठीक है, लेट मी जस्ट प्रेजेंट द स्क्रीन एंड ओके, जस्ट कंटिन्यू, अब सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो हम्म, ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी मतलब उसमें रहती है, जो मैं सेशन जो मैं लेता हूँ बेसिकली, उसमें भी ये सेम प्रॉब्लम, बिकॉज एक बार टाइम अप हो जाता है, उसके बाद में जब तक मैं वापस ज्वाइन करता हूँ तब तक वो आगे बढ़ चुके होते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये एक इशू है इसमें, ठीक है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, तो नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, so लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में वी कैन मेजरली टॉक अबाउट डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन एंड मैल यूनियन। तो डिलेड, तो मेजरली द थिंग इज कि ये मैंने आई थिंक कल भी बताया था कि 6 मंथ्स का टाइम जो होता है, ओके, हाँ, 6 मंथ्स का टाइम जो है, 6 मंथ्स का टाइम इज द मिनिमम टाइम दैट वी टेक, एंड 6 मंथ्स के बाद स्टिल इफ द बोन इज शोइंग improper union, और या फिर यूनियन में गया ही नहीं, तो इन दैट केस वी कैन से दैट द बोन हैज गॉन इनटू मैल यूनियन और मे बी इनटू नॉन यूनियन और ऑल दैट, ठीक है, तो लाइक लेकिन उसके लिए मेजरली हम देखते हैं कि अगर वो उसका डिले, बोन का डिले अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो जाता है, तो इन दैट केस वी कैन पुट इट अंडर नॉन यूनियन, and the thing is that the causes for that can be maybe like old age, of course वहाँ पे osteosynthesis जो that is not that much proper, or there can be any kind of malignancy, और कोई भी bony condition present हो सकती है, there can be gravitational force, of course वहाँ पे humerus जैसे हम देखते हैं, वहाँ पे gravitation force, and if proper support is not given to the bone, तो in that case of course it can go, it might go not get united है ना properly, there can be these muscle contraction, muscles present है attached with the bone, and muscle contraction or that can lead to this affected blood supply and all that okay, ठीक है, and there will be this fractured line which will be visible है ना, and or inadequate callus formation, ठीक है, ये सब हमने देख लिया, okay, this thing is really important, medullary venography is one of the test, और वन ऑफ द ये दिस मीन्स डायग्नोसिस, ठीक है, DX मीन्स डायग्नोसिस, RX मीन्स ट्रीटमेंट, तो डायग्नोसिस के इसमें डायग्नोसिस या फिर इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, तो हियर वी कैन सी कि यहाँ पे मेजरली मतलब मेडुलरी वेनोग्राफी इज डन, तो देर इज दिस रेडियो ओपेक डाई, मतलब रेडियो ओपेक मीन्स कि जो रेडियोलॉजिकली जो कि विजिबल रहे, मतलब जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, जो कि ओपेक जो दिखे, तो दैट पर्टिकुलर डाई इज पास्ड थ्रू द बोनी स्ट्रक्चर्स, एंड उसके बाद में वी सी दिस कि the dye is made to pass through the callus, अगर वहाँ पे callus formation अगर हुआ है, तो in that case if the callus मतलब वो dye जो if it is moving, अगर वहाँ पे callus formation होगा, तो of course it will pass through the callus, and then we will get to see it through the radiological examination, and वहाँ पे अगर हमें callus में अगर वो radio opaque dye देखने को मिल रहा है, तो in that case we can say that we can see कि वहाँ पे callus formation हुआ है वहाँ पे, है ना, तो that is the medullary venography that is performed in this condition. एंड इसके अलावा द ट्रीटमेंट कैन बी इलिजारोस टेक्निक और मे बी बोन ग्राफ्टिंग, बोन ग्राफ्ट भी हमें आगे जाके पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन ग्राफ्ट्स एंड डिफरेंट बोन्स विच आर मेजरली टेकन, जो कि मेजरली हमारा ग्राफ्ट की तरह यूज होता है, ठीक है, एंड द ऑटोग्राफ एंड द एलोग्राफ एंड द जीनोग्राफ्ट एंड ऑल दैट, वो भी हमें आगे जाके पढ़ेंगे हम, एंड एक्सेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स दैट कैन बी डन, तो दैट कैन बी यूज एज अ ट्रीटमेंट। मैल यूनियन सेम, अगर इफ द बोन हैज लाइक अगर बोन यूनाइट हो गई है लेकिन इन अ प्रॉपर पोजीशन अगर नहीं हुई, तो इन दैट केस वी नीड टू ब्रेक इट अगेन, है ना, तो इन दैट केस ऑस्टियोक्लासिस कहीं पे लिखा है यहाँ पे, हाँ, ऑस्टियोक्लासिस ना, ऑस्टियोक्लासिस द बोन इज रीफ्रैक्चर्ड एंड देन इट इज ब्रॉट बैक इनटू इट्स नॉर्मल पोजीशन, वापस उसको रीयूनाइट करते हैं, बट द थिंग इज कि अगर इफ द पर्सन इज एबल टू परफॉर्म देयर एडियल्स नॉर्मली, एंड अगर पर्सन की एडियल्स इफेक्ट नहीं हो रही एंड मेजर कुछ डिफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, एंड इफ द पर्सन इज कंफर्टेबल विद द लाइक विद द स्ट्रक्चर, अगर कॉस्मेटिकली भी वो जिस तरह से दिख रहा है, इफ द पर्सन इज कंफर्टेबल, तो इन दैट केस we just leave it like that only, but if the person is not comfortable with that, in that case the osteoclasis needs to be done, and it needs to be brought back into its corrected position na? Okay,
सम ऑफ द कंडीशन जो कि हमारे लास्ट में बचा है, बस उसकी हम बात कर लेते हैं एंड इट विल बी डन। तो ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हमने हमने पहले भी ये टर्म यूज़ किया है। ए वेस्कुलर नेक्रोसिस, जब भी एवियन की बात करेंगे ना, तो 3 बोन्स के नाम मेजरली हमारे माइंड में आने चाहिए। द फीमर, और यू कैन से द हेड ऑफ फीमर, मेजरली नेक ऑफ फीमर भी बोल सकते हो, हेड एंड नेक या मेजरली हेड ऑफ फीमर। इसके अलावा हमारा स्कैफॉइड, द वेस्ट ऑफ स्कैफॉइड एंड द नेक ऑफ टैलस। तो द थिंग इज की नेक ऑफ टैलस के थ्रू अगर फ्रैक्चर हो रहा है, या फिर वेस्ट ऑफ स्कैफॉइड के थ्रू अगर फ्रैक्चर है, या फिर अगर नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर है, या फिर जो फ्रैक्चर लाइन है इन द नेक ऑफ फीमर, इट इज़ मोर क्लोजर टू द फेमोरल हेड, या फिर फेमोरल हेड भी अगर फ्रैक्चर लाइन पास कर रही है, तो इन दैट केस वी कैन से देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वहाँ पे होगा ही होगा ए वेस्कुलर नेक्रोसिस, बिकॉज a large amount of these blood vessels, these arteries which are present in in close proximity with these structures, and अगर इन regions पे, जैसे हमने nerves में पढ़ा था, nerves में जैसे हमने देखा था कि ह्यूमरस का शाफ्ट फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे रेडियल नर्व इफेक्ट होता है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है तो वहाँ पे हमारा एक्सिलर नर्व इफेक्ट हो रहा है। लाइकवाइज वी कैन से कि दीज आर द बोन्स जहाँ पे जिनके एक पर्टिकुलर रीजन पे अगर हम फ्रैक्चर देखते हैं, तो देर इज अ वेरी हाई चांस that the blood supply might get affected, and because of that it can go into a vascular necrosis। तो जहाँ पे ऑफ कोर्स जहाँ पे बोन का जो ब्लड वेसल्स है या ब्लड सप्लाई है, that is getting affected, and because of that now the bone cells are going into necrosis, or they are getting affected, है ना। ऐसी हमारा एक कंडीशन होता है दैट इज कॉल्ड एज लेग कॉल्व पर्थीज डिजीज, है ना। हमने पहले एक बार ये टर्म सुना है, द पर्थीज डिजीज। तो पर्थीज डिजीज में देर इज ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड ऑफ फीमर, है ना। तो इफ देर इज any fracture or any affection of the blood supply near the head or neck of the femur, and because of that the supply to the head of femur is getting affected। तो because of that जो स्ट्रक्चर है हमारा हेड ऑफ फीमर का, that collapses, वो collapse हो जाएगा, and because of that now it is not able to be in the same this shape, है ना। and because of that condition is called as avascular necrosis। Of course that is a highly painful and highly you can say disabling condition for the individual, and the person needs to go for this surgical procedure, and emergency surgery में जाना पड़ता है उस केस में इंडिविजुअल को। okay, along with that there is this stiffness of the muscle that can be seen। majorly the stiffness अगर हम बात करते हैं तो one of the most common not the most common causes, लेकिन अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन में one of the most common causes for stiffness and for pain, and majorly अगर हम elbow की बात करें, that is the myositis ossificans, है ना, MO, that is the myositis ossificans। तो myositis ossificans, why it is seen majorly in children? Because in children we see that the periosteum is not strongly bound with the cortical bone, है ना। अभी bone हमारी immature state में, अभी bone has not gone into adult state ना। तो in that case you can say हमारा जो periosteum है, it is loosely bound with the cortical bone, and वहाँ पे अगर if the bone gets affected, तो in that case the periosteum, it strips off, it comes off of the bone, and the periosteum might enter some of the muscular structures and all that। तो in those cases of course after some time we'll see कि वहाँ पे जो प्रिंसिपल एलिजारोस टेक्निक में भी जो यूज़ किया गया था कि ब्लड सप्लाई वहाँ पे प्रॉपर है, तो ऑफ कोर्स उस बोन फ्रैगमेंट को जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली मिल रहा है, तो इन दैट केस ऑफ कोर्स इट विल ग्रो, एंड अगर वो ग्रो करेगा तो मेजरली हमारी जो मसल्स है उसके अंदर बोन फ्रैगमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज़ अ हाईली पेनफुल कंडीशन मेजरली इन चिल्ड्रन। तो एल्बो फ्रैक्चर के बाद में चिल्ड्रन में देर इज़ अ हाई चांस की there might be presence of myositis ossificans, and the major muscle myositis ossificans की अगर हम बात करें, the major muscle that is the brachialis। तो brachialis is one of the most commonly affected muscle in case of myositis ossificans, and that is seen majorly in elbow fractures and in the children, and because the periosteum is not strong, not tightly bound with this thing, ठीक है। ओके, आई थिंक टाइम भी हो गया, एंड बस एक लास्ट कंडीशन की बात करता हूँ, दैट इज़ रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी। उसके बाद फिर हम ये थोड़ा बहुत फिर हम कल देख लेंगे, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, तो कहाँ गया, हाँ, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी और स्यूडेक्स डिस्ट्रॉफी। तो यहाँ पे टर्म ही कंडीशन में यूज़ हो रहा है सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक इट मीन्स कि अगेन देर इज़ एनी इंजरी, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी में इंजरी हमें देखने को मिली। Now because of that of course there is this sensory input जो ब्रेन तक पहुंचा,
एंड एज अ रिस्पॉन्स ऑफ दैट ब्रेन ने ना सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट किया. तो वी नो दिस कि सिंपैथेटिक सिस्टम इज मेजरली फॉर फाइट एंड फ्लाइट, या जहाँ पे बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड ऑल दैट जो एक्टिव हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब ब्लड सप्लाई इज इंक्रीजिंग हाईली, मतलब काफ़ी हाई इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एंड ऑल दैट. दैट इज हैपनिंग इन द सिंपैथेटिक सिस्टम, अपोजिट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक में इट वाज रेस्ट एंड डाइजेस्ट, है ना, उसकी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक सिस्टम की. तो फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर ऑफ, बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर द ब्रेन कॉज द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. एंड बिकॉज ऑफ दैट हम देखते हैं कि हमारे जो आर्टरीज एंड जो ब्लड वेसल्स है, मेजरली उनके जो वॉल्स है, दे ऑल्सो गेट थिकेंड. तो आर्टरी की वॉल जो है वहाँ पे भी हमें थिकनिंग देखने को मिलेगी. एंड बिकॉज ऑफ दैट मतलब हमें अलग अलग पार्ट्स इन द बॉडी में विल गेट टू सी कि जो हमारे जो वेस्कुलेचर है, मेजरली नॉट ओनली द आर्टरीज बट द वेन्स एज वेल, the structures, the wall of the arteries and the veins, they get thickened, and because of that that can lead to this vague pain. अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हमें एक वेग पेन देखने को मिलता है. दैट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द कंडीशन, डायरेक्टली कंडीशन मतलब उस इंजरी की वजह से नहीं है, बट उस इंजरी की वजह से जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, एज अ रिस्पॉन्स ऑफ दैट हमें अलग अलग बॉडी रीजन्स में एक वेग पेन अलग अलग जगह पे हमें फील होगा. एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी, जहाँ पे एक रिफ्लेक्स सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज leading to the stiffness of the arterial and the venous walls, majorly in different regions of the body, and that is leading to vague pain in different parts of the body, and that is called as reflex sympathetic dystrophy or the Sudex dystrophy. ठीक है. तो there is this pain, there is this hyperesthesia, that is abnormal increase in the sensitivity to stimuli. तो मतलब कोई भी स्टिमुलस अगर मिल रहा है तो वहाँ पे एबनॉर्मल, देर इज दिस एक्सैजरेटेड इंक्रीज सेंसरी आउटपुट में, मतलब एक इंक्रीज सेंसेशन एक पर्सन इंडिविजुअल को मिल रहा है, जो कि नॉर्मल होना चाहिए था, उतना नहीं है, उससे एक इंक्रीज अमाउंट ऑफ सेंसेशन. या फिर देर माइट बी टेंडरनेस, स्वेलिंग दैट माइट बी प्रेजेंट, है ना, एंड द स्किन माइट बी seen red or shiny or warm. So that can be seen in case of reflex sympathetic dystrophy, or that is called as Sudex dystrophy. Okay? So these are these conditions which we can talk about in all these cases. The thing is that we must know these conditions, because again these are majorly used in the documentation of the patient's condition, है ना. पेशेंट की कंडीशन में ऑर्थो वार्ड की अगर हम बात करें या फिर इवन ओपीडीज में इनको डॉक्यूमेंट करने के लिए, एंड इट लुक्स प्रोफेशनल ना, कि अगर हम एक कंडीशन का नाम यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं कि देयर इज़ दिस थिंग दैट इज़ हैपनिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज फीलिंग पेन. एंड अगर हमें वो चीज़ देखने को मिल रही है, एंड इफ द कंडीशन इज डायग्नोस्ड, ऑफ कोर्स वी नीड टू राइट डाउन Sudex डिस्ट्रॉफी, है ना, वहाँ पे. एंड वी मस्ट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल, कि दूसरे पर्सन को पता होना चाहिए कि ये कंडीशन क्या होती है, Sudex डिस्ट्रॉफी, है ना. लाइकवाइज द मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस. ओके, आई थिंक टाइम हो गया है, एंड वी आर डन विद दिस. एंड ऐसा करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड.